earlier I had planned to apply for Canadian universities, only Canadian. Canada. Okay. So I applied there, but then, I had that American dream. I don't know. Okay. So, so as a backup, I started applying to US universities also. So I applied to like four universities and I got admission from all of them. First semester, I worked at Starbucks as a, and Okay. second semester, yeah, it was a What wa- very what was the different. experience? Yeah, I mean, I am not a very coffee person, हाँ. but it was definitely a very different kind. यहाँ Starbucks का अलग ही भूत चढ़ा हुआ है। Okay. मतलब it is manual labor तो है बहुत ज्यादा। हम्म. मतलब you work on like 6 to 8 hours continuous shifts. हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल। आप देख रहे हैं इंजीनियर्स डायलॉग्स। और आज का हमारा टॉपिक है मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम अब्रॉड, हाउ वी कैन अप्लाई टू डिफरेंट कॉलेजेस फॉर मास्टर ऑफ साइंस, एंड व्हाट विल बी द प्रिपरेशन प्रोसेस फॉर मास्टर ऑफ साइंस। और आज की हमारी गेस्ट हैं मिस पायल गांगुली, जिन्होंने इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल वुमेन यूनिवर्सिटी से बीटेक किया है। और शी वाज हैविंग around 3 years of experience before proceeding to MS. Then she moved for MS to Florida, and currently she is working as a information system engineer. So let's welcome to Payal. Hi Payal. Hi Rahul, thank you so much for having me here. And I also want the viewers to know that Rahul is like the first manager of my first full-time job. So, so yeah, Yeah. definitely a special one. So yeah, thank you so much again. Okay, so Payal, would you like to like add something which I just brief in your Yeah, introduction? sure. So, yeah, I'll just give a brief introduction. So, hi, my name is Payal Ganguly, and I did my master's from University of South Florida in Information Systems, and I just graduated in 2023, and I started my full-time as a software engineer from May. And prior to graduate studies, I did study at Indira Gandhi Delhi Technical University for Women as my undergrad, and also worked for 3 years in India as a software engineer. Okay, nice. And I think IGDTW is a tier two company. It was very difficult to get admission in that also. So would you like to like tell us like what was the process for getting into the graduation? Yes, yes, sure. So the selection process at IGTU is competitive and it has like multiple stages. First, the candidate has to appear for JE exam, which is joint entrance exam, and the cutoff. So there are several cutoffs from different category. So you have to, obtain a good ranking and have to be in the cutoff zone. Then after that, you have to have minimum of 60% marks in your 12th examination. And when you are like cross the cutoff mark, then you can appear for the joint admission counseling. If you are lucky enough, then you can get admission in the first round itself, but there are several rounds. So, candidates can try like 3 to 4 rounds for admission for the remaining seats in engineering. Okay, nice. जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हैं। लाइक you did your MS from Florida. Is there any experience needed for applying MS in abroad? So I would say it's not always necessary for a master's program, but it can, depend on different factors. So like field of study, like if a candidate is applying for a professional degree like MBA or like masters in public health, they require a lot focus on more on work experience.
But for computer science or these fields, sometimes the college also has their set criterias that you have to have like experience. Like for my case, the course I was enrolled in, they had a prerequisite that you should have like at least 2 to 3 years of prior experience. So and also, in some cases, I feel that having that work experience, it gives you a competitive edge in the Hmm. admission process, because it shows your commitment to that field and your ability to apply whatever you had studied in your undergrad. And also, this is my like personal point. So if you have work experience, you can also finance your studies, right? Yeah, So right. that is like, so I believe that it's crucial to, thoroughly research the specific requirements of the master programs because it depends on university to university as well as the field of study you are and going to pursue. and they also consider, I think, this job experience, right, in interview and Yes, your selection process, correct? exactly. Like, yeah, like after masters, since I had prior experience, right? So Hmm. I am right now. I am not as a junior software developer. I am like, uh, Hmm. I got the job as a like a experienced software engineer. So So yeah, you, experience would definitely matter. your experience did count after completing the MS, right? Yes, yes, definitely. Okay, राइट, ये तो एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता ही है. और एज यू सेड, लाइक इट गिव्स यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, लाइक to go for abroad and doing MS, definitely a large amount of uh, money is needed. So Right. would you like to brief some about like how did you manage that? So the money, I mean, it depends on person to person. For me, I chose a university because financial constraint was a thing for me. So I wanted to, sponsor my studies, like जितना हो सके मेरे से. So I like kind of saved whatever I earned, like in that 3 years of experience in India. And Okay. so I took loan. I had to take loan anyway. So it was like Hmm. 60-40%. Like 60% I used all my savings, and 40% like it was a combination of from my parents' funds, loan, all the FD, RD, Okay. all mix. Okay. Yeah. Or what is the like cost, or I'll say fee structure required, like average, I'm saying, not for the Florida only, for Have, MS, any idea, yeah, like? yeah, again, I would say it depends on the location also. So Florida colleges में थोड़ा सा कम होता है and Mhm, especially but if you go like near the Bay Area, like West Coast, I live in mhm. the East Coast, right? So like California side and New York वाले colleges में बस fees would be like a higher. So but I Around would say if any figure? yeah, if given a range, it would like minimum 30, would like minimum 30 lakhs 30 INR. lakhs. Okay. So it can go up to like 60, 70 It is for including only, including yeah. uh, like जो स्टे का खर्चा है वो भी उसमें इंक्लूडेड है, या ओनली फी स्ट्रक्चर बता रहे हो आप? स्टे का नहीं एक्चुअली, मतलब कभी कभार होता है बट इट्स नॉट नेसेसरी अगेन, मतलब इफ यू लिव नियर द यूनिवर्सिटी लाइक Mhm, इन कैंपस देन इट इज डेफिनेटली एक्सपेंसिव. इफ यू लिव ऑफ कैंपस और थोड़ा सा दूर यूनिवर्सिटी से देन mhm. द रेंट्स एक्चुअली डिक्रीज. बट ओवरऑल अगर बट रेंज अगर बताना है लाइक द रेंट, the miscellaneous, this food, groceries, and insurance also. Insurance is necessary. Health insurance होता है हमें. So we have to purchase that insurance every Okay. year. And so वो include करके it will like come, that range comes around like 30 to 60. Yep. Including insurance. Yep.
ओके। और या आई थिंक अगर स्टे के साथ मैं बात करूं तो मोस्टली डबल, बिकॉज इट इज ए 2 ईयर प्रोग्राम, राइट? सो 1 ईयर का स्टे का खर्चा ऑलमोस्ट कितना आ जाता है पर वन ईयर? ईयर का, या आई मीन, अगेन, कैसे हो, मतलब इधर ना बहुत ऐसे, मतलब आर यू इन द प्राइवेट अकोमोडेशन और आर यू इन द हाँ, इट शेयर्ड डिपेंड्स। अकोमोडेशन, ओके। वो सब भी मैटर करता है. So, and also, like private is definitely more expensive than shared. And shared में भी like कितने लोग share कर रहे हैं एक room, वो भी depend हाँ। करता है. मतलब first year तो people like to, मतलब जितना हो सके, जितना बचा सके, मतलब राइट। वैसे रहते हैं. But then after you get an internship or some like good amount of income, then people often tend to shift to a private accommodation. तो So इंटर्नशिप किस बेसिस पे मिलता है वहां पे? So so basically here, what happens is, so internship you can't start on the day one of your master's. It's basically you have to be on the American soil for 9 months. So after ओके। like 2 semesters, like for example, I started my master's in 2021 August. हम्म। So I was only eligible for internship from May 2022 हम्म। last year. So ओके। उससे पहले, I mean, we can't, we are not eligible for internship. So internship, वही मतलब इधर, so unlike India, इधर everything you have to do on your own. चाहे जॉब, एवरीथिंग, मतलब उधर ओके। प्लेसमेंट्स होते थे कॉलेज में, इंडिया में, मतलब तुम्हें बिठा के एग्जाम्स दो, वो करो. इधर ऐसा कुछ नहीं है. इधर यू ओ। हैव करियर ओके। सेंटर्स, या इधर यू हैव करियर सेंटर्स इन एवरी कॉलेज, जहाँ पे ऐसे करियर काउंसलर्स हैं हु विल गाइड यू, लाइक resume, in terms of resume, in terms of mock interviews, they will. हम्म। Yeah, but then at the end of the day, it's all you. I mean, you have to, you know, सब कुछ drive करना है. तो yeah, definitely a very tedious process than India. India में it's like सब कुछ press spoon fed होता है. इधर वैसा नहीं है. ओके। But तो वहां yeah, पे internships कॉलेजेस में नहीं आती हैं कंपनीज? नहीं. इधर वो सिस्टम, करियर फेयर्स होते हैं हमारे वर्चुअल करियर अच्छा। फेयर्स, ऑफलाइन. सो कोविड के टाइम से थोड़ा वर्चुअल होने लग गया सब कुछ. बट अभी दोबारा से लाइक, मतलब ऑन साइट करियर फेयर्स ऐसे होता है. बट हम्म। करियर फेयर्स में भी इट्स नॉट गारंटीड दैट यू विल गेट अ जॉब, बिकॉज देयर आर लाइक booths of different companies. You go to every, like there are representatives of different इट्स काइंड ऑफ अ companies, so जॉब you. फेयर। Exactly, same way, job fairy. So अच्छा। you go with your resume, you talk to them, they will हम्म। give you a contact. If you are lucky enough, you will get a call from them, and so on. So yeah, I mean, LinkedIn and networking. These two things are the most important to find either job or internship here in the US. ओ। ओके। इट Yeah. इज डिफिकल्ट So देन you have, yes, एज definitely. I कंपेयर टू mean, इंडिया। एज यू सेड कि स्टे का खर्चा भी काफी आता है और फी का खर्चा भी होता है। सो यू Hmm. डिड एनी पार्ट टाइम जॉब देयर? Yes, उसके बारे I में कुछ did बताओ। part. हम्म। Yes, sure. So every semester I try to do some kind of part-time job. हम्म। So, but और एक चीज है, in US, if you are on a student visa, you are not allowed to do work off campus. All the work has to be inside campus. It's illegal ओके। to do off campus here. So what I did, like first semester, and also for every work you need to get a SSN. So इधर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर का कॉन्सेप्ट है, जैसे इंडिया में पैन नंबर होता है, हाँ, पैन कार्ड राइट। नंबर. करेक्ट। तो यहाँ पे भी हर जॉब के लिए दे वुड रिक्वायर यू टू हैव दैट. बट देन डाइनिंग जॉब्स में, सो फर्स्ट सेमेस्टर यूजुअली लोग, मतलब स्टूडेंट्स डाइनिंग जॉब्स में जाते हैं. डाइनिंग मीन्स इट्स लाइक, हम लाइक
कैंपस के अंदर काफी सारे कैफेटेरियाज है, रेस्टोरेंट्स है। हम्म। तो उधर इट्स लाइक एज अ कुक और एज अ कैशियर, एज अ वैसे टाइप के स्टूडेंट फूड वर्कर बोलते हैं, वैसे टाइप के काम कर सर्विस सकते। कंपनी, सर्विस बेस्ड जॉब। Yeah, kind of. So हम्म। dining jobs mein they don't require you to have SSN. So that's why in my first semester I worked as a barista at Starbucks here. ओके। And so once you get a job, then they will give you the appointment letter. And with that appointment letter, then you apply for your SSN. So after you get your SSN, then you can hop on to other jobs as well. So for my case, first semester I worked at Starbucks as a, ओके। and second semester, yeah, it was a व्हाट very व्हाट वाज द different. एक्सपीरियंस? Yeah, I mean, I am not a very coffee person, हाँ। but it was definitely a very different kind. यहाँ Starbucks का अलग ही भूत चढ़ा हुआ है। ओके। मतलब इट इज मैनुअल लेबर तो है बहुत ज्यादा। हम्म। मतलब यू वर्क ऑन लाइक 6 to 8 hours कंटिन्यूअस शिफ्ट्स ऐसा। तो बट तुम्हारा वन गुड थिंग तुम्हारा फ्रंट डेस्क पे था या किस पे था? आई मीन सर्विंग मेरा वाला तो था? हाँ, या फ्रंट डेस्क मतलब वही कैशियर टाइप का जॉब्स और कैशियर। ओके। कॉफीज वगैरह बनाना ऐसा टाइप। अच्छा, वो तो चेंज होता रहता है। हाँ हाँ, वो ड्यूटी मतलब वो लगती है अलग अलग क्योंकि शिफ्ट्स होते हैं ओके। सबके। तो तो या इट वाज कैसा डिफरेंट। कैसा फील हुआ था जब तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब करने के बाद तुम स्टारबक्स में गई थी? तो मतलब यहाँ पे द वन थिंग विच आई न्यू इट ऑलरेडी, बट वन थिंग विच आई रियली लाइक दैट यहाँ कोई भी जॉब ना छोटा या बड़ा नहीं मानते। इवन अ प्लम्बर जॉब और अ ड्राइवर जॉब, वो लोग भी मतलब मैं सही बोलूँ, द ट्रक ड्राइवर भी ना सॉफ्टवेयर से ज्यादा कमाते हैं। इंजीनियर से कुछ ज्यादा कुछ कमा कम लेते बड़े हैं? से। ओके। हाँ। हाँ हाँ, तो मैंने भी पढ़ा था एक जगह। राइट। यहाँ पे वो मतलब चीज नहीं है, मतलब एवरीबडी इज ट्रीटेड वेरी इक्वल। बट हम्म। देन ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द, आई मीन, योर लेबर, मतलब फिजिकल लेबर बहुत होता है ऐसे टाइप के डाइनिंग जॉब्स में। हम्म। But Baki, it was an experience, I would say, like customer front, because day to day you have to deal with the customers, like real life customers, and राइट। thoda cashier wala kaam. ऐसा। But ओके। and also one advantage of working in dining is तुम्हारा खाना sort रहता है, so you get the meal coupons. ओके। So ओके। at least that is sorted. हाँ हाँ। तो वो एक है। ओके। And so first semester ऐसे ही गया मेरा, and then second semester I worked as a research assistant at Microsoft. So ओके। yeah, so either common jobs आउटसाइड द basically कैंपस? no, it was affiliated with US, मतलब मेरा ही college. So ओके। Microsoft came here to interview people as a research assistant. So I worked as a research assistant. Like my main responsibilities were analytics and all those stuffs in Microsoft Azure, basically. माइक्रोसॉफ्ट पर। ओके। So ये वाला yeah, एक्सपीरियंस तुम्हें अच्छा लगा होगा। yeah, इट definitely. वाज There was a रिलेटेड टू big योर jump. Yeah, टेक्नोलॉजी। yeah. और इसमें स्टाइपेंड भी थोड़ा ज्यादा होगा हाँ, एज कंपेयर टू definitely. Yeah, स्टारबक्स। ओके। yeah, yeah, yeah. ओके। वैसे वहाँ पे And स्टाइपेंड क्या रहता है पार्ट टाइम जॉब्स में? so इधर hourly wages का concept है, ओके। other than the full time. तो full time पे तो it's like India जैसा total compensation होता है, but इधर either if you are a contractor or if you work in part time, तो इधर hourly. So every state has its own. तो Florida में अभी average it's like uh, 11 to 12 per hour ऐसा ओके। per. And also while also ये भी rule है, if you are on a student visa and if you are like studying, so you can only work 20 hours per week. Also, उससे ज्यादा मतलब नहीं कर तुम्हारे सकते? नहीं, that ओके। is illegal again. But in summer जब तुम्हारे classes नहीं होते, then you can work for 40 hours per week. ओके। ओके। ऐसा। Yeah. अच्छा, काफी एक। rules and regulations. हाँ Yeah. हाँ, राइट। सो फर्स्ट सेमेस्टर में स्टारबक्स एंड देन सेकंड में Second semester में research assistant हम्म। with Microsoft. Then उसके बाद summer
समर आया तो समर में आई वर्कड एज अ आईटी स्टूडेंट असिस्टेंट in ओके. USF IT department. And then from third semester and fourth semester, I got internships. So I was working like इंटर्नशिप्स में भी third sem. स्टाइपेंड अच्छा मिल जाता है. Yeah, internships में तो और ज्यादा मिलता है मतलब it depends on the ओके. company, but yeah, and the role also. बट उसमें आई थिंक आपको टास्क परफॉर्म करने होते होंगे, जॉब जॉब टास्क मिलते होंगे उसमें. इट्स काइंड ऑफ अ Yeah, जॉब. yeah, yeah, same as kind. It's just you are an intern. हम्म. एंड मेरा तो रिमोट ही था मतलब सो थर्ड सेमेस्टर वाला मेरा पूरा रिमोट था फोर्थ सेमेस्टर वाला मेरा लाइक वन डे आई हैड टू इट वाज इन टैम्पा ओनली सो मतलब मैं जहाँ पे लोकेटेड हूँ हम्म. तो उधर बस एक दिन मुझे जाना होता था ओके. तो या so I believe like this part-time jobs, मतलब it is a great way to gain work experience. मतलब अमेरिका का कॉर्पोरेट कैसा चलता है इधर का वर्क प्लेस मतलब कैसा है हाँ. and also time management skills like because if you are studying you are working so वो time management skills like बहुत अच्छे से तुम्हें सिखा देता है राइट, तो राइट. बिल्कुल हाँ, और आपकी स्टडी के बाद उस पे फिर जॉब पे जाना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको टाइम मैनेजमेंट तो करना ही हम्म पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट सरवाइव, है ना. yeah और yeah लाइक हाउ मेनी आवर्स जॉब इट वाज फॉर पार्ट टाइम, 4 to 5? No, no. Part-time, it's basically if you are so internship का rule थोड़ा अलग चलता है. Part-time is you are only allowed to work 20 hours per week पर वीक. ओके. while you are studying. But summer में अलग rule होता है. मतलब क्योंकि summer में कॉलेज बंद रहता है और अगर तुम्हारे पास कोर्सेज नहीं है तो you are allowed to work 40 hours per week. डबल हो जाता है वो. ओके. बट इंटर्नशिप्स का ऐसा होता है कि इंटर्नशिप्स में होता है फुल टाइम एंड पार्ट टाइम तो मेरे जो दोनों इंटर्नशिप्स है दोनों ही फुल टाइम थे तो फुल टाइम का मतलब है 40 आवर्स पर वीक सो मंडे टू फ्राइडे इट्स लाइक 8 आवर्स नाइन ओके. टू फाइव ओके. जैसा अच्छा, अभी थोड़ा सा स्टेप बैक करते हैं. while you were applying for MS, so like what was your journey to prepare for MS? Like you were doing job in India at that time, and at the same time you were preparing for MS, so it was difficult. या डेफिनेटली इट वाज चैलेंजिंग फॉर श्योर because I mean, so MS का ऐसा सीन होता है like you have to prepare for the test like GRE, GMAT, TOEFL, IELTS होता है. Not only those things, but you have to get the LORs, letter of recommendations from your professors or from your employers. Then writing the essays, statement of purposes. Hmm. वो सब होता है. So it's a very holistic process, like getting an admission to the US. It's just not dependent on the test scores. So I mean, definitely it was challenging, like managing job responsibilities and everything. But yeah, I mean, it was worthwhile, I would Okay, say. so is there any common test for all the universities, or separate test for every university? Yes, yes. So there are two types of test होता है. एक होता है GRE GMAT. So GMAT is usually for business oriented जैसे MBA वगैरह के लिए अगर जाओगे Okay. तो you have the GMAT. But master in science like जो STEM fields के courses होता है जैसे मेरा भी STEM field. STEM Mhm. is like science, engineering, technology वाले field. उसके लिए GRE होता है, graduate record exam. Mhm. And then there is a English language test. So either it's IELTS or TOEFL. तो दोनों में से कोई एक दे सकते हो. So I gave GRE and IELTS IELTS. for Okay. and What every was the university. score? Score, okay, GRE I gave like a long time back. So GRE I gave in 2018 when I graduated like undergrad में ही मैंने Oh, दे दिया just था. after that. Okay. Yeah, yeah. And IELTS I gave GRE I got like 315. So out of three to मतलब usually it depends on the university also. हर एक university का ना एक कट ऑफ एकदम स्ट्रॉन्ग कट ऑफ नहीं होता बट ये लोग Mhm. बोलते कि इफ यू
if your score lies under that range, then Hmm. you are good to go as a. Okay. So 310 above is a good score, matlab average uh, score. And IELTS mein I got like 8, yeah, 8 of out of 9, IELTS is yeah. related to English only, right? Yes, yes, it's reading, Hmm. speaking, listening, most about that. And how for how many universities you applied? So yeah, so actually earlier I had planned to apply for Canadian universities, only Canadian. Canada. Okay. So I applied there, but then I had that American dream, which I don't know. Okay. So, so as a backup, I started applying to US universities also. So I applied to like four universities, and I got admission from all of them. Uh, and um and also like while applying, you have everybody has their own set of filters. For me, it was the curriculum, the program कि कैसा courses, because इधर ऐसा होता है कि curriculum में you get a lot of options to choose. I Hmm. mean, it's not like set कि तुम्हें यही courses पढ़ना है. You get elective courses, so it's upon you how you want to design your curriculum. Like for example, like Mera course was a mix of tech and non-tech, analytics and engineering both. So like if you want to go towards a little, business analytics side, so you can take little thoda business oriented wale courses. Hmm. My goal was to go into technical pura. So I chose like most of all technical wale courses, Okay. technical and analytics, etc. And yeah, so that was that. And For how many yeah, universities you received the letter? so I applied to University of South Florida, University of Chicago, University of Buffalo, University of Arizona, and University of Colorado. And I got from all of them Oh, nice. admission. Yeah. And yeah, and also weather was a very big factor for me. I don't like winters. So Okay. although I applied to like Chicago, Buffalo, ये सब एकदम up north में है. Hmm. But I just applied for the sake of applying. But Hmm. ऐसा ही था कि मतलब मुझे नहीं मतलब I like the Florida weather, मतलब Okay. moderate weather, and also expensive What financial is the what is the factor. weather like generally in Florida? Florida, it's like अभी तो it's like 30 degrees Celsius normal summer. Yeah, मैंने तो वैसा. मूवीज में ही देखा है And बस. आई थिंक इट्स बीच बीच साइड राइट. बीच yes, उसके. yes, पूरा हाँ. beach, हम्म. beaches है इधर वाइज है. एंड मतलब शिकागो और बफेलो में तो नेक्स्ट लेवल स्नोफॉल होता है. अच्छा. शिकागो में भी होता है. शिकागो में इट्स अ वेरी विंडी वाला वेदर. ओके. बट हाँ, मतलब मुझे विंटर्स उतना नहीं जमता. एंड ऑल्सो फाइनेंस वाज अ बिग फैक्टर, since I told कि I wanted to sponsor my studies जितना हो सके. तो मतलब there are a lot of options. I mean, if you want to actually study from, big मतलब Ivy League, मतलब उनके फीस तो बहुत ज्यादा है. But then you have to check your reality check भी होना चाहिए. राइट. कितना फंड कर पाओगे. तो वो ओके. सब फैक्टर्स इंक्लूड करके तो I chose ओके. this. आगे बढ़ते हैं. लाइक आपने इंडिया में भी इंडिया से बीटेक किया है और वहां से एमएस. सो लाइक व्हाट Hmm. डिफरेंस यू गेट इन एजुकेशन सिस्टम, द वे Yeah, ऑफ there's टीचिंग. a Yeah, big difference, I would say. So, starting off with the admission process. So, in US, as I said, it's a holistic approach because it includes your test scores, your essays, your letters of recommendation, all these factors. In India, it's usually depends on the exam. Like एग्जाम. for example, मेरा IGDTU में it was just the exam, like my 12th का score or JEE mains का score. Um, then the grading system, like India mein, the grading system, it's usually matlab based on the percentage or GPA ऐसा होता है. And it's only based on your exam scores, जो test होता है, final exam midterms. But यहाँ पे
In the US, it's usually जो grading system है, it's usually letters like A, B, C, D, A plus, B plus, वो सब रहता है. And it is not only based on the exams, but it's weekly assignments, फिर presentations, फिर projects, coursework, like सब कुछ का mix होके it's so हम्म. definitely a better approach, I would say, because it gives you a lot of exposure to, मतलब hands on होता ही है काफी, मतलब Okay. practical, मतलब yeah, because you get to apply your knowledge to the projects and all these assignments. Basically, So, and they follow a more practical approach in terms of exactly, yeah, assignments or maybe some projects. Okay. yes, yeah, presentations वगैरह, मतलब इससे पता है क्या होता है कि इंडिया में जैसे होता था कि एग्जाम्स ऐसा है, तो एग्जाम के एक दो दिन पहले बैठ के बीटेक, Okay. टिपिकल बीटेक. बट Questions, इधर ऐसा important था, questions. बट इधर ऐसा है कि एवरी डे देयर इज समथिंग समथिंग, सो यू आर, मतलब तुम अगर पढ़ोगे भी नहीं ना, यू आर फोर्स टू, मतलब Hmm. बेसिकली तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा in order to sit for the test ऐसा. Hmm. So it's always you are in touch with whatever is happening in the classes. और अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता इधर. जैसे इंडिया में कुछ कुछ कॉलेजेस, जैसे मेरे कॉलेज में था लाइक 75% यू हैव टू हैव दैट अटेंडेंस वाला. Okay. Okay. इधर का इट्स अप टू यहाँ पे यू, नहीं. यू कम. हाँ, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम तो आओ जाते ना हैं, आओ, स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे. जाते हैं, मतलब कुछ कुछ कोर्सेस में नहीं जाते. इंडिया में ऐसा हो गया तो फिर नहीं जाएगा कोई. हाँ. वही. यहाँ पे मतलब जाते हैं कुछ कुछ में अगर कुछ कोर्सेज अगर बहुत बोरिंग है ऐसा तो नहीं जाता, हम्म. क्योंकि सब कुछ का ऑनलाइन मटेरियल भी मिलता है ऐसा. बट हम्म. हाँ, मतलब वो डिपेंड, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर. कुछ प्रोफेसर्स नहीं देते, दे आर लाइक कि कम टू द क्लास देन आई, हम्म. ऐसा. तो वो सब भी मैटर करता है. एमएस सिर्फ वहाँ पे जॉब पाने का एक जरिया है, या एमएस वालों को थोड़ा एडवांटेज मिलता है ग्रेजुएट्स से ओवर पे स्केल? या आई मीन, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री, द लोकेशन. बट अगर मैं ओवरऑल बोलूँ तो यस, तुम्हारे अगर हायर डिग्री है तो यू वुड डेफिनेटली गेट बेटर पे. पे स्केल में एंड डिफरेंस. ओके. यस, एंड ऑल्सो देयर आर जॉब्स, मतलब मैं सिर्फ अपने फील्ड के बारे में बोल रही हूँ, लाइक आईटी, कंप्यूटर हम्म. इंजीनियरिंग, इसमें कुछ जॉब्स में दे वुड रिक्वायर यू टू हैव either PhD or masters, so they will not allow you to take, मतलब बीटेक सिर्फ करके. ओके. और एवरेज पे स्केल क्या है वैसे यूएस में आफ्टर So एमएस? average, yeah. So like for software engineers or like ऐसे fields में तो it's after MS it would the range is like $70,000 to $120,000 per year. And again it depends on the location. मतलब मैं इधर फ्लोरिडा में हूँ, so I would definitely, because location से, so इधर tax system भी थोड़ा अलग है. हाँ, Every राइट. state has its own इधर, मतलब in Florida we don't have state tax. So in order, so वैसे ही compensate होता है, state tax नहीं है तो तुम्हारा income level भी थोड़ा कम होगा. But on the flip side, if you are in California, New York side, then उनका फेडरल टैक्स, स्टेट टैक्स दोनों होता है, तो उनके सैलरीज भी उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा होता है. ओके. Yes. तो फिर भी कोई फिगर? Yeah, I mean, more or less, it would lie around 70,000 USD ओके. to 120,000 120. USD. Yeah, ओके. it can go और more, but it's average. ओके. ओके. हाँ. और while applying for MS, doing the MS, selecting for the university, कोई ऐसी चीज जो आपने, like you did wrong, you feel like I did that wrong, और कोई और अगर करना चाह रहा है, कोई परस्यू कर रहा है एमएस, तो उसको नहीं करना चाहिए? एनी सजेशन?
मतलब while pursuing MS, right? right? Or In after maybe? okay. I would say, I mean, I'm not sure, like if I have to give, sort of advice to the future aspirants, ऐसा, so Okay. I would say कि don't underestimate the importance of planning, of coursework, assignments, and part-time jobs if you're doing one. Because I've Mm, observed this one thing very commonly, like among the students, that students, they often tend to take too many responsibilities, like part-time jobs, बहुत सारे कर रहे हैं, extracurricular activities, so which can, detract them from their actual studies, जिसके लिए वो actually इधर है. Because in order, everybody wants to, earn, ऐसा, okay. Okay. जितना पैसा, so they forget about study, they take up so many jobs, and Mm, at the end of the day, like the purpose of coming to the US, जो तुम्हारा मास्टर्स है वही भूल जाते हैं. So ये एक है, and second is, yeah, don't resist change or new learning methods. यहाँ पे काफी मतलब like be adaptable and open to new set of ideas and new working styles, ऐसा. mm, Don't restrict yourself कि तुमने इंडिया में जैसे काम किया. ओके, मतलब मैं इंडिया में, उधर हमारे इतने ऐसे होते हैं कि सब कुछ हाउस हेल्प इतना कुछ होता है, एंड इफ यू आर right. लिविंग विद योर पेरेंट्स, देन फिर तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। yeah, मतलब in my case that was the thing. I never lived separately. हर समय मेरा पेरेंट्स के साथ ही हुआ है. तो ऐसा नहीं, मतलब इधर आके तुम्हें सब कुछ खुद ही करना है. Starting from setting up your bed to करेक्ट। सब कुछ. कुक फूड, Uh, yes, everything. ग्रोसरीज, एवरीथिंग। Cleaning, राइट। everything. So, yeah, I would say like go with a open mind and yeah, learn as much as possible because I feel कि जो masters का journey, it's not about only studies, but it's about like तुम्हारा life experience है, मतलब it's a बहुत, as a person you grow a lot, करेक्ट। मतलब. So yeah, that is. और टीचिंग way is different, right? In like in Yes. US, so classroom teaching ways I am talking about. So उसमें थोड़ा Yeah. कुछ difficulty हुआ है starting में या it was okay? इतना कुछ नहीं हुआ, मतलब सो बेसिकली इधर ना ऐसे बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, लाइक इट्स लाइक यूजुअली ऑडिटोरियम्स में क्लासेस होते हैं. इट्स लाइक 50 to 70 स्टूडेंट्स ऑल एट वंस, ऐसा. बट पर्सनली मुझे तो जितना छोटा क्लासरूम है उतना सही रहता है, बिकॉज यू गेट टू इंटरेक्ट विद द लेक्चरर at a more better way. But then professors are very friendly over here. They are like, and I mean, so we have this as a Canvas system जहाँ पे you get online exams. So इधर टेस्ट भी ऐसा होता है कि तुम्हें क्लास में जाके नहीं देना होता, मतलब तुम घर बैठ के Okay. दोगे एग्जाम्स, बट इट्स ऑल ऑन वीडियो ऑन करके सब कुछ. बिकॉज इधर प्लेजरिज्म का बहुत बड़ा सीन है, मतलब तुम्हारा ब्राउजर ट्रैक होता है, तुम्हारा कहीं भी चीटिंग, No cheating. Okay. नथिंग, या नथिंग इज अलाउड. वो इंडिया Okay. जो चीज होता है दैट इज नॉट. सो दैट्स व्हाई, मतलब यू हैव टू स्टडी, यू आर फोर्स टू Right. डू. एंड इधर ओपन बुक टेस्ट होता है, मतलब जितना भी पढ़ लो Oh, तुम्हारे एग्जाम ऐसे होते हैं. हाँ, कुछ कुछ थोड़े से फिर ओपन तो बुक होता है, तुम सभी इंडियंस पास कर जाएंगे उसको तो। तो नहीं होता ना. ओपन बुक तो इसलिए होता है कि तुम्हें मिलेगा राइट। ही नहीं उस क्वेश्चन उसमें का मिलेगा आंसर. नहीं, करेक्ट। नो, आई हाँ, नो क्योंकि दैट। इधर, बिकॉज इधर ना जो क्वेश्चंस पूछते हैं प्रोफेसर्स टेस्ट में, दे आर यूजुअली एप्लीकेशन बेस्ड. सो जैसे इंडिया में यूजुअली इट्स लाइक, ओके, यू लर्न अ डेफिनेशन ऑफ अ एक्स वाई जेड टर्म, यू जस्ट राइट इट इन द एग्जाम. वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि व्हाट इज दैट एक्स वाई जी. बट यहाँ पे हाउ डू यू अप्लाई दैट एक्स वाई जी इन दिस केस, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस Oh पूछते yeah, हैं. I know, I know. I'm just kidding. Yeah. uh, So, so, like, you have worked in India around 3 years, right? And now I mhm. think you have just started as a full time in US. So, culture-wise, uh, work-wise, what is the difference you see?
To be honestly speaking, I didn't see a lot of difference. ओके. Pretty much like same, but एक चीज मैंने जो वो मुझे पता था एंड और एक देखा है कि यहाँ पे लोग they like to differentiate between personal and professional life and also weekends को it's like इंडिया में काफी कंपनीज में देखा है कि वीकेंड्स में भी काम कर रहे यहाँ पे ऐसा है कि ओके. वीकेंड्स मीन्स वीकेंड्स डोंट ओपन योर लैपटॉप ऐसा अनटिल एंड अनलेस मतलब कुछ अलग इमरजेंसी डिप्लॉयमेंट बट डिप्लॉयमेंट्स होते नहीं है ऐसे संडे हम्म. सैटरडे को तो बाकी वही है मतलब थोड़ा सा वैसा कल्चर है कि ओके आफ्टर 5 क्लोज और शट डाउन योर लैपटॉप ओके. ऐसा but then again it depends on the company वर्क एंड and फैमिली बैलेंस काइंड uh, ऑफ. yeah थोड़ा better है than India बस ओके. और any future plans like you will settle in US or it's any a question that this question like I get so many times I mean okay let me explain कि क्या है the visa system okay hmm, it's a complex process US का immigration is one of the most complex and one of the right. most difficult so right now I am on student visa so Hmm. student visa hota hai it is issued up to 5 years so I got my student visa in 2021 and it will expire in 2026 and so after you graduate like I graduate this year so you have to apply for work visa which is Hmm. H1B visa you don't have to apply it's basically your employer has to sponsor you and you get 3 attempts for that work visa so Okay. if you are in the STEM field मतलब जैसे STEM field मतलब ये टेक्नोलॉजी साइंस हाँ, वाले राइट. जो कोर्सेज है उसमें वो है तो मेरा जैसे my first attempt will be from next year 2024 because ओके. I graduated this year so 3 attempts में you have to get that H1B ओके. and if you don't get then ओके. then there is a different scenario like I mean, it's not that you have to come back to the country, mother to India, There are a but lot of if else conditions. Okay. yeah, it's a condition. Yeah, Okay. Okay. but Got yeah, it. matlab No, it's not I up was to I was talking about like your wish. You will stay there, right, for long, or you will for come back yeah after till some the time. time yeah I mean till the time I'm allowed to work here I would like to I mean see the work culture पूरा मतलब और experience मुझे करना है just 2 years here so Okay. जब तक मेरा वीजा अलाउड होता तब तक तो I am here I Okay. mean उसके बाद I'll see I mean I haven't made any concrete plans as of now Hmm. because see I mean this visa and all it's all lottery based it's nothing Yeah, merit right. based तुम्हारे किस्मत में नहीं है तो It's मिल very जाओ difficult for आगे US, right? I know that. यस ग्रीन कार्ड तो भूल ही जाओ मतलब दैट इज तो अलग ही वो है तो वही मतलब अभी इसलिए मैंने इतना ज्यादा इतना यू नो 5-10 साल का इतना मैं प्लान करके नहीं चल रही जस्ट कि Okay. एटलीस्ट 2-3 साल या आई वुड Hmm. लाइक टू बी हियर वर्क हियर एंड सी हाउ थिंग्स गो देन आई विल Okay. प्लान I think conclude करते हैं अब. ओके का- अभी मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. So you wanted to like share something else which I'm not like I do not have any more questions for you. Maybe I did not Here, ask. um, here, I guess, I mean, see, everything, people think that, okay, masters करने जाओ तो तुम्हारा लाइफ सॉर्ट है ऐसा है मतलब ये Okay. एक मैं एक्सपीरियंस वाइज से बोल रही हूँ बट ऐसा नहीं है टू बी Mhm. ऑनेस्ट लाइक स्टूडेंट्स हु कम हियर ना दे नो द रियल पिक्चर ऐसा it's Okay. not so easy to get a job it's not so easy to get an internship here you have Mhm. to try you have to work so much it's and not only applying as I said like you have to do other part like सब कुछ मतलब खाना बनाना इधर घर वर सब कुछ वो करना साथ में you have to study and apply for jobs reach out to so many
recruiters, so many networking का बहुत बड़ा इधर वो है concept है, and it's actually there because I personally have experienced the more you network, the more I mean you are get रेफर exposed to the रेफरेंस बहुत चलता है वहाँ पे yeah टू गेट द जॉब. referrals का yeah referrals का system भी काफी वो है, so like for a future aspirant, like make sure that you have your resume and LinkedIn ready and polished so that whenever you network with the recruiters, because they will ask you for your resume if it goes in a positive way, ओके. then yeah, I mean make sure like from day one you although you like for example I started in 2021, so I was not eligible before May 2022, but that doesn't mean कि मैं मई तक वेट करूँ internships and उसके लिए, because इधर बहुत जितने बड़े companies है ना, like all this big tech, उस उसके लिए like you have to start like from the previous year on itself, मतलब काफी महीने पहले प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है इनके इंटर्नशिप interviews, because there are several rounds, several all these things. So ओके. yeah, I mean, yeah, and yeah, I would say like it's definitely a worthwhile journey. मतलब as a person, you grow a lot, and yeah, open to new, make friends, make new connections, because वही चलते हैं इधर. Unless ओके. until तुम्हारे family है इधर, और वही है मतलब try to be मतलब like the company of yourself ऐसा, क्योंकि सब कुछ तुम्हें ही करना है at the end of the day अकेले. ओके. But yeah, ऑलराइट. Okay, thanks, Payal, for joining us, like, yeah, and sharing sure, your sure. knowledge, your experience on how to apply for MS in different subjects, and the differences, the culture difference in US, India. So yeah, thanks for sharing, and thanks for coming up on our channel. Surely, thank you so much, Rahul. You are doing a great job. I mean, that interview, I saw all of your videos. Like, it's really Okay, nice, it's and just starting. yeah, Let's see yeah. how it will go. Okay, thanks, Payal.